इतनी अच्छी चीज़ होती तो बहुत नेचुरली सब लोग बोलते ले लो, हमें छुप के नहीं करनी पड़ती ये चीज़ें कि पीपल आर सेलिंग इट इन हिडन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एंड विद द केस दैट हैपेंड इन बॉलीवुड एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? सो द थिंग इज कि लॉन्ग रन के लिए इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इशूज. अ पर्सन कैन हैव हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स. इट्स लाइक आपको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो नहीं हैं, आपको वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट? इट कैन लीड टू साइकोसिस ऑल्सो. तो अब ये यूथ को डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए उनको जीना है या लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपनी लाइफ बेटर करनी है. टुडे शॉर्ट टर्म प्लेजर डेफिनेटली कैन स्पॉइल योर लाइफ इन फ्यूचर बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं, शी इज़ अ थेरेपिस्ट. शी हैज़ बीन इन साइकोलॉजी फॉर more than 5 years. She is also a writer. She is a motivational speaker. She has her own YouTube channel. She has also written her book. Right. So first thing first, Jay, thank you for having me here for this interview. And I would really like to say that their community is doing a great job. I just went through their Insta page and YouTube channel. I did my homework. So definitely these people are doing a fabulous job. So yes, it's not a paid promotion, but do, go and follow them. They're doing a fabulous job. When we talk about psychology, we have this mentality कि जो medicine जाता है, medicine करना चाहता है life में, कहीं ना कहीं अगर वो medicine नहीं कर पाया, they choose this profession, psychology. But I know you because we have like we have talked before this interview also, and I can say that you have this in your blood. You wanted to be a psychologist. So where did you get this thought कि ये चीज मुझे करनी है life में? Okay. See, I'll be breaking in one more secret over here. So, in my life, I also wanted to be an IAS officer. Very few people know about this thing. So, I have given my attempt in IAS. But yes, to be very honest, I landed into this field accidentally because I was preparing for my IAS and, I was graduating with psychology. So, I wanted, one day I wanted to be an IAS officer. But when I got deeper into the study of psychology and, understood that this field can really, bring in a change in people's life and, connecting to somebody's pain, helping them, travel the journey from one tunnel that is very dark towards the light, it can really bring a change in their life. So that really pumped me up to come into this field, genuinely help people and, make them feel that, there is hope at the end of the tunnel. And that's where I came up with my brand name known as Hope the Psychology Clinic. Okay, ma'am. Now I would like to say that still you're a civil servant. Yes, nothing changed. Definitely. So moving on to my next question, ma'am. When we talk about psychology, a lot of people relate it to some disorder. Yes. Like the guy is maybe dyslexic or having some mental problems. But how can a normal guy relate psychology? I mean, the definitions are clear. People are talking about that psychology should be taken seriously by normal common people. But why? Why like a person like me should come to a psychologist and pay that much amount of money? CJ, I feel that whenever my clients come to me, they are really confused. They sit in front of me and कुछ लोग ज़बरदस्ती आते हैं जिनके पेरेंट्स ले आते हैं, कुछ लोग खुद की मर्जी से आते हैं, they're not able to understand where their life is going. And nowadays there are very common terms being used कि we are depressed, maybe हमें OCD हो गया. That's a very common term being used among you youth in college as well, right? So they come to us because they're somewhere confused in their life, right? तो मैं उनको साइकोलॉजी ऐसे समझाती हूँ कि देखो लाइफ की एक मेज होता है, इट्स जस्ट लाइक अ मेज गेम एंड यू गेट स्टक इन दैट एंड यू नीड समबडी टू ब्रिंग यू आउट ऑफ देयर. तो ऐसा नहीं है कि द सो कॉल्ड क्लीशे टर्म दैट इज यूज दैट एम आई मैड और आर यू मैड दैट यू गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट. सो टू ब्रेक दैट मेंटल स्टिग्मा दैट सी मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज कॉमन एज फिजिकल हेल्थ, राइट? अगर आपको पेट दर्द होता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं. इफ यू हैव लाइक अ हार्ट प्रॉब्लम यू गो टू कार्डियोलॉजिस्ट, राइट? सो देयर इज नो प्रॉब्लम विजिटिंग अ साइकोलॉजिस्ट इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ हेवीनेस इन योर हेड और इन योर हार्ट और जस्ट फेसिंग सम स्ट्रेस इश्यूज इन योर लाइफ, जस्ट लाइक दैट. ऐसे लोग भी आपके साथ होंगे जो बहुत ज्यादा दे डोंट रिक्वायर इट, दे कम टू यू, एंड देयर विल बी पीपल जो मतलब जिनको चाहिए ये चीज and they're coming. So how will you differentiate or kya hai level? See, there's this very why I'm calling it a funny incident is because हमारे साथ ऐसा होता है and I would really like to put light on this movie Dear Zindagi
इस मूवी ने हमारे फील्ड को बहुत अच्छा पंप दिया है. दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन. आई एम नॉट गोइंग बाय द कम्युनिटी और समथिंग. सो इट हैज़ रियली गिवन दैट पंप. सो एक बार ऐसा हुआ था, एक स्कूल की बच्ची मेरे पास आई थी. ऑब्वियसली आई विल नॉट बी रिवीलिंग द नेम ऑफ द स्कूल और द किड. नॉट इवन अ किड, शी वॉज एन एडोलेसेंट, राइट. सो शी केम टू मी एंड उसका जेन्युइन प्रॉब्लम था. सो शी वॉज टेकिंग हेल्प फॉर हर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड ऑल दैट. एंड धीरे 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 मुझे पता चला था कि उनकी और भी फ्रेंड्स मेरे पास आ रहे जिनको कोई इशू ही नहीं था. बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट इज ऑल अबाउट. सो द थेरेपी हैज रियली बिकम अ कूल ट्रेंड in the youth कि चल के देखते हैं वहाँ पर होता क्या है. देन दे डिस्कस देयर थेरेपी सेशंस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. उन थेरेपिस्ट ने आपके साथ क्या क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे साथ क्या पूछे थे, एंड देन टैगिंग देमसेल्व्स आज कि हमें कुछ मेंटल इलनेस है. सो थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट ओवर हियर आई वुड लाइक टू से दैट सी पीपल हु सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस, दे आर रियली गोइंग थ्रू अ जर्नी. So just tagging yourself as OCD, as depression and all that, so sometimes it doesn't become a good deal because it is hurting somebody's feelings. So there are few criteria like हमारा एक DSM-5 criteria होता है psychology का, so we go by that, or ICD-10 criteria is there. So until unless those criteria are not matching, personality assessment में वो चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं, तो खुद को बोलना कि हमें डिप्रेशन है या हमें ये है, वो सही नहीं होता. वी गेट क्लाइंट्स जो हमारे सामने आके बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड. देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू यू फील यूर फीलिंग डिप्रेस्ड. Only feeling sad or low is not depression. I am repeating it. Only feeling sad or depressed is not sad or low is not depression. There are a lot of criteria attached to it. See, a depression can even lead to suicidal tendencies among people. And yes, sadly, due to suicide, we are losing a lot of lives. So spreading mental health awareness is becoming very, very important. And breaking the stigma is very important. जब तक लोग नहीं समझेंगे कि मेंटल हेल्थ इज एज नॉर्मल एज फिजिकल हेल्थ, दे विल नॉट कम आउट टू टॉक. सो येस, वी गेट क्लाइंट्स हु आर genuinely available to work on their areas, on the gray areas I would say, and travel the journey in a better hope that one day our life can become better. And yes, I have seen that happening. I have seen a lot of successful cases in my clinic. I have really seen people approaching me and wanting to travel that journey towards mental health. I want to ask you, like, ma'am, as a psychologist, do your life changes? Because me as a person, I really like researching more about the brain. There are shows on YouTube. There's a YouTube channel, Vsauce, in which they talk about psychology and how it changes you. Right. So does it happen to you? To be very honest, at that time, the kind of person I was and now the person I am, it has really bring in a difference. So first thing first, I am an introvert. जो अब बिल्कुल देख के मुझे नहीं लगता that I'm an introvert. So I'm basically an introvert in my personal life. So this is my work personality, wherein I meet so many people every day. So and I have a lot of public interactions and everything. So definitely I have become much more calmer person, I would say. जो चीज़ें मुझे शायद 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, now I just take it in a very lighter form. But one good thing about me is, and I think everybody should try that thing, is कि life का learning कभी रुकता नहीं है. I will not say I've become a best person. I always believe every day when I come to my clinic, I start my journey as if it's my first day at my work, and I keep on learning. Okay, that's really nice, ma'am. Moving forward, as we are college students and we are stuck to weed, we have to ask these questions. Just for youth awareness. I don't take anything like that. Okay. Understand. Go ahead, please. So, like, if I talk about your patients, there may be patients who are prescribed with drugs, like weed or cannabis or stuff like that. So, how does it help? You said that you can always look for happiness outside these drugs, but how can these drugs help? What do they do actually? See, basically in drugs का क्या होता है, they definitely raise some chemicals in your brain, that gives you a very happy feeling, that gives you a very high feeling on top of the world feeling, right? तो वो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो टेकिंग दीज ड्रग्स, सी अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो बहुत नेचुरली सब लोग बोलते ले लो, हमें छुप के नहीं करनी पड़ती ये चीज़ें कि पीपल आर सेलिंग इट इन हिडन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एंड विद द केस दैट हैपेंड इन बॉलीवुड, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? सो द थिंग इज कि लॉन्ग रन के लिए इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इशूज. अ पर्सन कैन हैव हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स. इट्स लाइक आपको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो नहीं हैं, आपको वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट? इट कैन लीड टू साइकोसिस ऑल्सो. तो अब ये यूथ को डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए उनको जीना है या लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपनी लाइफ बेटर करनी है.
today's short term pleasure definitely can spoil your life in future because excess of everything is bad. अगर एक इंसान वीड ले रहा है, यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ इन सब इंटॉक्सिकेंट्स को, बट अगर जस्ट टू हैव फन एंड चिलिंग अराउंड पार्टी, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल लेके अगर कोई कर रहा है जस्ट टू एक्सप्लोर, इट इज़ काइंड ऑफ स्टिल ओके. बट एडिक्शन ऑफ एनी थिंग एंड एवरीथिंग इज़ बैड. आज अगर मुझे कॉफ़ी का भी एडिक्शन हो जाता है वो भी गलत हो जाता है. या फिर अगर आपको एक एडिक्शन हो जाए शॉपिंग का कि नहीं मेरे को तो रोज़ शॉपिंग करनी है, पैसे खर्चने हैं, वो भी गलत हो जाता है. सो यू रियली नीड टू टेम योर माइंड समटाइम्स कि नहीं, आप हर बार एक्सेस नहीं कर सकते. सो द मैसेज इज़ कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में जाना है या लॉन्ग रन में अपनी लाइफ बेटर करनी है, क्योंकि डेफिनेटली वीड एनी अदर इंटॉक्सिकेंट्स, उसके माइनस साइड्स ज़्यादा है रादर देन द पॉजिटिव्स. यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी. बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस. सो कई बार मेरे पास भी आई डोंट कॉल देम पेशेंट्स बिकॉज एक मेंटल हेल्थ को लेके ऑलरेडी बहुत स्टिग्मा बना हुआ है. सो आई कॉल देम माई क्लाइंट्स. ओके, सो दैट दे फील वेरी ईजी विद इट. सो मेरा जो एक बुक भी है होप का, तो उस पर मैंने क्लाइंट रिकॉर्ड लिखा हुआ, नॉट माई पेशेंट्स रिकॉर्ड. सो दैट्स माई ओन पर्सनल थिंग अगेन. सो लोगों को जब आना होता है मेरे पास, तो वो पूछते हैं साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका पर्पस क्या है मिलने का. हमें अपने बच्चे को दिखाना है. सो आई सेड यू आर लुकिंग फॉर थेरेपी. दे से येस. सो आई सेड देन यू नीड टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट. सो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन. ओके, सो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं देयर स्टडी थिंग इज बिट डिफरेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट. साइकेट्रिस्ट डू देयर MBBS, देयर MD एज वेल. ओके, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें MBBS MD की ज़रूरत नहीं होती है. We do a basic graduation, then the master's is needed, then there is this course called MPhil, and then going for PhD or not going for PhD is optional. So अगर आपको एक अपने आगे डॉक्टर लगाना है तो आप अपना PhD कर सकते हैं. Going into research work अगर आप कह रहे हैं अपना PhD कर सकते हैं. But yes, as psychologists we cannot prescribe medicines. वो काम साइकेट्रिस्ट का होता है. इन फैक्ट इफ़ वी गो वेरी एथिकल, अगर हमारे पास कोई मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी आ रहा है कि ये मेडिसिन मेरे को लास्ट टाइम किसी साइकेट्रिस्ट ने दी थी, अब अवेलेबल नहीं है, तो आप बता दीजिए हम ये ले लें, एथिकली दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. वी कैन नॉट गाइड देम अबाउट द मेडिसिन. अगर हमें पता है तब भी हम बोलेंगे गो टू द साइकेट्रिस्ट एंड दैट इज द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट द मेडिकेशन पार्ट. एंड वी एज साइकोलॉजिस्ट वी डू काउंसलिंग एंड थेरेपीज एंड ऑल दोज थिंग्स. So if I have to put it in a nutshell, it's like same difference between a doctor and a physiotherapist. Yes, definitely. You can say that thing. जैसे एक ऑर्थो होता है, एक फिजियो होता है. सो ऑर्थो आपको मेडिकेशन देता है, फिजियो आपको सेशंस और थेरेपी वगैरह देते हैं. सो डेफिनेटली इट गोज हैंड इन हैंड. डेफिनेटली इट गोज हैंड इन हैंड बिकॉज हम काफ़ी सारे अपने केसेस साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं और साइकेट्रिस्ट हमारे पास रेफर करते हैं. सो बोथ फील्ड्स दे गो हैंड इन हैंड. और अगर आप एजुकेशन की भी बात करें तो ड्यूरेशन उतना ही लग जाता है. टू बी अ साइकोलॉजिस्ट आपको वही 7-8 साल ईजिली स्पेंड करने पड़ते हैं. 3 years ऑफ योर graduation, then 2 years of your masters, 2 years of your MPhil, and to add on PhD करना है तो और जितना भी आप में रिसर्च टाइम लगता है उतना. Okay. So we got the difference. Now the thing I want to ask is, if somebody wants to like become a psychologist, Yes. so what experiences can he or she think कि ये चीज़ें हो सकती है मेरे साथ लाइफ में. And plus like we talked about society, how society treats psychologists. Let's talk about family. How family treats psychologists. See, luckily I have been very thankful when it comes to my family. My parents have been very, very supportive. They have never peeped into the thing कि क्या करना है क्या नहीं करना है, and you can see the product in front of you. So I always say the confidence that I've got, the personality I've got, that is because of my parents. Because parenting is very important. I have seen a lot of parents poking into their kids' business कि ये पढ़ाई करो, वो करो, आपको ये करियर नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए. My parents have never done that. They have always set me open with the faith and trust that definitely, I am just choosing a right path for myself. Yes, parenting is important. And if I tell about my profession, that they ever had a problem with my profession, never ever. In fact, जैसे आपने बताया है society एक psychologist को कैसे लेती है, so I would like to narrate one funny incident. So one day, my mother's friend, so she met me and she was asking that अच्छा आप कौन से field में doctor हो. I told them I'm a psychologist. So her first reaction was like, and I was like नहीं, then I explained her कि what a psychologist role is. कि सिर्फ आप एक्सट्रीम में जो साइकोटिक या जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं सिर्फ वही नहीं आते हैं. देयर आर लॉट ऑफ ब्रैकेट्स दैट कम एंड जस्ट टू अटैच देम विद दिस
term called mad is not the right way. So again, promoting it, going to a cardiologist when you have a pain in your heart is, the same way. So the only thing is अभी क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहा, एंड दैट इज़ वॉट शाहरुख खान सेड इन डियर जिंदगी, जब मेरे रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स से पूछते तुम क्या करते हो, तो वो बोलते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वो एक साइकोलॉजिस्ट है. सो सी ऑलवेज से जब तक आप बाहर आके यू डोंट बी वेरी ओपन अबाउट इट. अगर आज साइकोलॉजिस्ट मैं ही आज हो जाऊँ कि येस यू शुडंट बी टॉकिंग अबाउट, आई प्रमोट माई क्लाइंट्स की एंड लकली आई हैव अ ग्रेट क्लाइंटेज. मेरे क्लाइंट्स खुद बाहर आके दे गिव योर देयर टेस्टिमोनियल्स. मैं उनको बोलती हूँ कि दैट यू वांट मी टू हाइड योर आइडेंटिटी एंड ऑल दिस, नो मैम, वील गिव आवर पिक्चर्स एंड ऑल दैट. So there are people who are promoting mental health except us, as professionals. हम तो कर ही रहे हैं, but आप जैसे लोग, the youth we are connecting to, so वो भी promote कर रहे हैं. So I think पहले में आज से 5-6 साल पहले और अब के कंपैरिजन में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ आई है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोग ओपन अप हो रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग दैट स्टिग्मा, they are talking their hearts out, and they're making the field as normal as any other socio-medical field, I would say. Physio. Yes. So, like, tell me one thing, ma'am. Like, for a physio, we know that if we are having this pain Yes. in my knee or in some particular part of my body, I have to see a physio. Right. What will you say that what will be the time where you should see a psychologist? See, the best time to see a psychologist is whenever you feel ki something is wrong, your lifestyle is not going as normal as it was going, your sleep cycle is disturbed now, आपका एपेटाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. अगेन एपेटाइट से मेरा मतलब सिर्फ भूख कम लगने से नहीं है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, डूइंग बिंज ईटिंग, आप अपने रूम में लॉक्ड हो रहे हो, आप बाहर किसी से मिलने का आपका मन नहीं कर रहा, एंड अगेन वेटिंग फॉर इट. कभी कभी आपको मूड स्विंग्स वैसे भी हो जाते हैं. सो वेटिंग फॉर इट मे बी फॉर 5 days अ वीक, 10 days, उसके बाद भी अगर आपने सब ट्राई कर लिया जो आप करते हो, चीज़ें नहीं ठीक हो रही, सो 10 to 15 days देन यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. बिकॉज देखो होता क्या है, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू पीपल. आपको एक फीवर है, लाइक आपका एक टेम्परेचर हो रहा है कि रोज़ आपको 100 फीवर हो रहा है, सो यू गो टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है जस्ट टू सी इज इट नॉर्मल वायरल, इज इट अ डेंगी फीवर, कोई और फीवर तो नहीं है, एंड देन यू आर गुड टू गो. सिमिलरली इफ यू कम टू अ प्रोफेशनल, अगर कुछ मेजर नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस है, वी कैन प्रोवाइड यू विद सम थेरेपीज, वी कैन हेल्प यू आउट विद CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड यू कैन गेट बैक टू योर लाइफ. तो अगर एक चोट छोटी है उस पर हम तभी वर्क कर लेंगे, उसको बड़ा ना होने दें, सो दैट इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. इट इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज हर एक डिसऑर्डर की शुरुआत कहीं ना कहीं स्ट्रेस से होती है. Okay, and if we talk about Indian society, the thing is, ma'am, the difference is still not clear. If you would say, the sleep cycle is disturbed, Right. or you are locked in the room. So Indian parents, they tend to think, maybe he's going through adolescence, maybe he's changing, Right. and all these things. अगर मैं एक लाइन खींचना चाहूँ कि this is where you require it and this is you don't require it, like what will be that line? सी अगेन, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, वो जिस एरा से निकल के आ रहे हैं, उनके टाइम में ये सब इश्यूज नहीं होते थे, शायद होते भी थे तो अवेयरनेस नहीं थी, राइट. बट अब के यूथ में वो अवेयरनेस है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिबेलियस विद देयर पेरेंट्स, जो कि जनरली एडोलेसेंस कर देते हैं, और उनकी भी पूरी तरीके से गलती नहीं होती, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. सो आई ऑलवेज बिलीव कॉन्वर्सेशन इज द की. अगर आप बैठ के अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, या पेरेंट्स अगर बैठ के बच्चों को सुनेंगे, ना समथिंग इज जेन्युइन and helping them. I get a lot of parents जो अपने बच्चों को लेके आते हैं, they're very very supportive, and then again I have parents also जिनको समझ नहीं आता कि anxiety क्या होती है. So if you sit, if you talk, if you understand, if you take them to a psychologist, again saying it as normal as taking them to a physician for a checkup, at least आपको एक clarity हो जाएगी that something is wrong with my child, or things are clearly okay. अगेन साइको एजुकेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बच्चा सिर्फ बोलता रहे, या वो यूथ सिर्फ बोलता रहे कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है पेरेंट्स नहीं समझे. वो कुछ केस स्टडीज़ दिखा सकता है, वो कुछ वीडियोस दिखा सकता है कि देखो मेरे को ये इश्यूज आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम आई नीड अ प्रोफेशनल हेल्प. एंड होपफुली दे विल अंडरस्टैंड. इफ दे डोंट अंडरस्टैंड देन दे कैन टेक हेल्प ऑफ अ फ्रेंड. हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं और वो फ्रेंड के साथ आ रहे हैं. सो वी कैन टेक कंसेंट ऑफ एनी ऑफ द नोन वंस एंड प्रोसीड विद द थेरेपी. Okay, and ma'am, if I talk about depression, I don't know if it's allowed to say that or not. Like,
what will be the things, you know, you can check in yourself, you know, the genuine tests, not Right. those who are available on the internet, because I've seen a lot of them, you know, if you feel this, if you feel this, because all of them feel like even if you go look for symptoms for like blood cancer, you'll find it, you have it. Right. So what are the things, you know, if they are there in you, you can say, okay, I'm going through depression, I should, you know, see Right. professional. सी जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले एक टर्म यूज़ करा था DSM-5 क्राइटेरियाज, ठीक है. इंस्टेड ऑफ स्टैम्पिंग योरसेल्फ खुद से, एक DSM-5 क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको गूगल पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. सो इफ़ यू सर्च फॉर DSM-5 क्राइटेरियाज ऑफ डिप्रेशन, आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसमें कुछ चीज़ें होंगी, एक पूरी लिस्ट होगी जिसमें 10-12 चीज़ें लिखी होंगी. So DSM-5 would say that, you know, if you match in, you know, these criteria, any of the 5 or 7 criteria for 15 days or 20 days or 30 days, then yes, you know, you need to seek a professional help. So depression की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ feeling low से नहीं होता जो. It has to be like feeling low, feeling sad, एपेटाइट का कम होना, बढ़ना, वेट गेन, वेट लॉस, स्लीप इश्यूज होना, इंसोम्निया कह सकते हैं, डिस्टर्ब स्लीप होना, आप सो रहे हो बट आप सुबह उठ रहे हो, आपको लग रहा है नॉट, यू नो, फीलिंग दैट फ्रेश, लूजिंग इंटरेस्ट, यू नो, लूजिंग इंटरेस्ट, बीट अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपका कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, आप जॉब पे जा रहे हो, यू नो, इट्स लाइक हार्ड दैट समबडी इज पुशिंग यू कि चलो काम करने चलते हैं. सो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. अगर ये कुछ नंबर ऑफ डेज तक चलते हैं, देन येस, यू रियली नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट. और जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा, यू नो, विद अ सेशन और टू, दे विल टेक देयर टाइम टू डेफिनेटली स्टैम्प यू. इफ़ वी गो विद अ असेसमेंट, कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती हैं. सो देयर इज दिस वन पर्सनैलिटी असेसमेंट known as TAT, that is thematic apperception test. So it's a worldwide use test. इंडिया में कुछ कार्ड्स अलग हो जाते हैं. सो देयर सम पिक्चर्स जो हम दिखाते हैं, उस पर कुछ स्टोरी क्रिएशन होता है, कुछ इंक्वायरीज होती हैं. सो यू नो, अ पर्सन विद एमफिल डिग्री, सो आई हैव माई सीनियर्स अलॉन्ग विद मी हु डू दिस टेस्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो उससे बहुत क्लियरली कुछ ट्रेट्स हमारे निकल के आते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी अ पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, आपको डिप्रेशन है बट आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुपर डुपर टफ रही है लाइफ में, you can, you know, overcome that thing much faster as compared to a person who has been, you know, really anxious throughout the life. मैं ये नहीं कह रही वो ठीक नहीं हो सकते. They might take their own time and pace to work on things. And you know, I always say therapy is a two-way process. It's just like मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं, घर जाके अगर आप वो फॉलो नहीं करो, इट्स जस्ट लाइक मैंने आपको मेडिसिन ली, घर जाके आपने साइड पे रख दी, तो आप ठीक नहीं हो सकते. You really need to work on it. थेरेपी इज़ नॉट अ स्पून फीडिंग प्रोसेस. थेरेपी को मैं हमेशा ऐसे बताती हूँ दैट आई विल बी शोइंग लाइट, और जो पाथ पे चलना है वो आप ही को चलना है. Okay, so ma'am, you are also an author of a book called Budding Thoughts, in which you discussed ki how important it is for a person to follow his passion also. Yes. Now, in business perspective, I can say, you know, if you follow your profession, within the limits of your passion, you get, you know, better results. कि अगर मैं प्रोफेशन के लिए कर रहा हूँ कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि इंजीनियरिंग करके मैं पैसे कमा सकता हूँ, आई वुड नॉट बी अ गुड इंजीनियर. सिमिलरली गोज फॉर अ डॉक्टर, फॉर इवन फॉर अ ड्राइवर. इफ ही थिंक्स कि यार ड्राइविंग मैं इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को फायदा देगी, पैसे कमा के देगी, तो आई वुड नॉट से कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, बट ही वुड नॉट बी अ गुड ड्राइवर. दैट इज नॉट हिज पैशन. आई वांट टू नो, in terms of a psychologist, how can you actually explain this? Why is it important for a person to follow passion instead of just, you know, profession for money? Right. See, इसका एक मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दूंगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ. एक आपका बैंक बैलेंस होता है जो सबको पता है कि हमारा बैंक बैलेंस है, राइट? Nobody takes care of their emotional balance. So the term बैंक बैलेंस एवरीबडी नोज कि आज हम इतना डेबिट करेंगे, इतना क्रेडिट करेंगे, ये हमारा बैंक बैलेंस होगा. अगर वो कम हो रहा है तो टेंशन शुरू हो जाएगी, नहीं भाई कमाना है और उसमें डालना है. बट योर इमोशनल बैलेंस, कि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, यू नो, आप लाइफ में खुश हो या नहीं हो, आप खुश से ज़्यादा दुखी हो, उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता. इफ़ यू स्टार्ट मेंटेनिंग योर बैंक बैलेंस अलॉन्ग विद योर इमोशनल बैलेंस, सेइंग इज कि अगर आप अपना प्रोफेशनल एंगल जो है उसको अगर आप पैशन से मिक्स कर दो, और गोइंग वाइस वर्सा, इफ़ यू मेक समथिंग योर प्रोफेशन विच इज़ एक्चुअली योर पैशन, सो थिंग्स बिकम वेरी इजी. पैसा डेफिनेटली, अगर आप मैस्लोज हायरार्की देखो, उसमें कई डिफरेंट नीड्स बताई गई हैं. सो डेफिनेटली एक मनी इज़, यू नो, वन ऑफ द ड्राइव कि आपको काफ़ी सारे अपने चीज़ें सेटिस्फाई करनी होते हैं, यू हैव टू बाय स्टफ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बट एंड ऑफ द डे, सी, इफ़ यू सिट विद योरसेल्फ एंड यू नो, इफ़ यू से दैट यू आर नॉट हैप्पी, समथिंग इज़ रॉन्ग. यू नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अपना स्टार्टअप करना होता है, बट दैट फियर कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, यू नो, आई ऑलवेज टेल देम ट्राई फॉर इट. फेल होके ना बेटर ही लगेगा. एटलीस्ट यू फॉलोड योर पैशन
और अगर वो आपका पैशन है तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप फेल होगे, बिकॉज यू बी पुटिंग योर हेड एंड हार्ट इन इट. इन अ जॉब जो आप कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, आप सिर्फ अपना दिमाग लगाते हो. बट अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो, उसमें हार्डवर्क लगेगा, सब चीज़ें लगेंगी, बट यू आर फॉलोइंग योर हेड एंड हार्ट. And tuning both of them will give you best results in life. A lot of people get affected by the noise of the crowd. दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी. 3 Idiots में अगर आपको याद होगा, that guy who wanted to do that photography thing, तो उसने अपने पेरेंट्स को ये बोला था, मुझे नहीं समझ आता वो बाजू वाले अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे and all that, because he was into engineering college, जो उसको नहीं करना था. He wanted to follow his passion. And that is what he actually did. And अगर आपने मूवी के एंड तक जाते हो, he was earning good. So पैसा कमाना, ट्रस्ट मीजिए, मुश्किल नहीं है. इट्स अ वेरी हाइप्ड कॉन्सेप्ट, आई वुड टेल यू. अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कमा सकते हो, पर खुशी कमा रहे हो या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस दिन आप एक काम को करते करते खुश हो, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट वर्क, उस दिन आपकी अर्निंग डबल भी हो सकती है. बट इफ़ यू आर अर्निंग एंड इफ़ यू नॉट हैप्पी, then sorry to say maybe same पैसा आप अपनी हेल्थ पे लगाना शुरू कर दोगे when you go to a age. So that's my answer. I want to ask, अगर हम बात करते हैं यार डिप्रेशन की, या फिर जब भी कोई मैं ब्रेन से रिलेटेड बात करता हूँ, माइंड से रिलेटेड बात करता हूँ, तो उसमें होता है कि वी नीड टू शेयर. दैट्स व्हाट द साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट, दैट्स व्हाट पीपल सजेस्ट, यू नीड टू शेयर. There are things which I cannot share with my closest of friends, even my girlfriend, my parents, my siblings. How can a person sitting in an office, also charging you money, you can trust that person? Right. See, first thing first, Jay, we are professionals, okay? So somebody coming to us, definitely at the first go, they're apprehensive that, are we going to the right person? Why should we trust this person and all that? But कुछ हमारी policies बनी होती हैं, we cannot breach those policies. So जब हमारे पास clients आते हैं, we, first thing that I do is I accept them the way they are. बाहर दुनिया में भी उनको जज करती है. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम इतने लेजी क्यों हो. सो दोज आर द बेसिक टैग्स. सो समबडी वॉकिंग इन टू माई क्लिनिक वेरी लेथार्जिक, आई वुड नॉट आस्क दैट पर्सन दैट व्हाई आर यू वॉकिंग दिस वे. I'll just ask them, please take your seat. I'll make that person feel comfortable about this environment that he is in. I will give him an assurance कि things will remain confidential and you can trust me on that. I will not break your trust. किसी को इतना कहना that I will not break your trust, किसी को एक फेथ दे देता है, and उस चीज़ पे स्टिक करना. क्योंकि अगर वो मेरे पास 3-4 सेशंस के लिए आ रहे हैं और उनको दिख रहा है कि हाँ ये बातें कहीं बाहर नहीं गई, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताई गई, या जिसने भी मेरे को कंपनी किया नहीं बताई गई, so they will have that trust in me, right? And as I said, acceptance is the key. Being non-judgmental, being acceptable about the way they are, and having a good rapport formation. अगर मैं बहुत सीरियस हो जाऊँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि ओके कम सेट, अच्छा ये वो, तो ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन नहीं ओपन होगा. मेक दैट पर्सन फील रिलैक्सड अबाउट इट. अगर मेरे पास एक एडोलेसेंट आ रहा है, सो मे बी आई कैन आस्क हिम अबाउट देयर फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम पे, राइट? मेरे से एक दिन पेरेंट्स ने एक सवाल पूछा था, एक पेरेंट ने, कि ऐसा दोस्तों में क्या होता है जो हम में नहीं है. मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा आपको आके, आपका एडोलेसेंट आके आपको बताता है कि आज मैंने बाइक पे स्टंट मारा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप डांटोगे, यू विल से कल से बाइक की चाबी नहीं मिलेगी. सेम एडोलेसेंट जो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वो बताता है स्टंट मारा, तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे? अरे हमें भी मार के दिखा. एक्सेप्टेंस, नो जजमेंट कि तुम चलाओगे गिर जाओगे, वो फियर नहीं इनकलकेट करा. सो एक्सेप्टेंस इज द की. आज जितना आप किसी को एक्सेप्टेड फील कराओगे, किसी को ये फील कराओगे दैट आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम ओके विद द वे यू आर, तो उतना ही जल्दी वो पर्सन कंफर्टेबल हो जाता है. ओके, जस्ट लिसन टू व्हाट योर हार्ट इज सेइंग. अपने दिल की आवाज़ सुन के ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे. डोंट गो बाय द नॉइस ऑफ द क्राउड कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा. गो बाय द कॉन्सेप्ट. बैंक बैलेंस भी अच्छा रखो, इमोशनल बैलेंस भी अच्छा रखो, बी देयर विद योर लव्ड वंस, एंड ट्रस्ट मी, द जर्नी ऑन द अदर साइड ऑफ टनल इज ऑलवेज गुड. डार्कनेस से भी निकलो, पेन से भी निकलो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द वीडियोज ही वॉच, जय शेट्टी का वीडियो, ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. इवन ही हैज़ गॉन थ्रू समथिंग इन हिज लाइफ एंड ही हैज़ लर्न थ्रू इट. सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every day I start my journey, every day, with the hope that today is a new journey and today is a new learning. So live by that.
And yeah, the interview was great, Jay. So I'll be winding up with one of my poetry, which is very very close to my heart, जो मैं बहुत सारे platforms पर narrate कर चुकी हूँ. So it's a Hindi poetry, क्योंकि मेरे को लगता है being Indians we connect more with Hindi in Hindi, right? So the title is ख्वाब. जब तुम सच्चे ख्वाब बनोगे तो एक कायनात भी देगी साथ तुम्हारा. तेज लहरों के जैसे ये ख्वाब बहेंगे, खुले आसमां के नीचे ये बुनते रहेंगे. ख्वाब हैं आज़ादी तेरी, उन्हें बनाना बंदिश तू. अब बस खुले पंखों की तरह उन्हें दे अब उड़ने तू. चलता जा इन राहों पे और बुनता जा कुछ ख्वाब तू. पर्वत जैसे ऊंचे हो तो भी मत घबराना तू. एक दिन ऐसा आएगा तो शिखर पे पहुंच जाएगा, और वहाँ पे खड़ा हो इस दुनिया को बताएगा कि सच्चे मन से देखा हुआ हर ख्वाब पूरा होता है. मंजिल अगर सच्ची हो तो कोई रास्ता कहाँ खोता है. So on that note, I would like to say good luck to each one of you watching this video, and lots of love, spread humanity, and keep shining. And ending up with the mantra, I believe no hill is tough to climb. So see you at the top. Okay, ma'am, if you have seen that movie, what is it called? There's Bruce Willis in it. Sorry. No. Bruce Willis in it. It's called, I think. What is it called? I don't know. I And watch Bruce very Willis. less movies. It's on psychology. It's called. It's related to some death or something. Beautiful Mind. Memento. No. I don't know. There's this Beautiful Mind. I've seen that. Bruce Willis's movie. Oh my god. Okay, I don't know. I forgot. It's on psychology. Uh-huh. Let me remember the name. Bruce Willis. There's a guy. Oh, The Sixth Sense. Okay. Have you seen it? No. Okay. I'm not much of a screen person. I'll be very honest. A lot of promotions going on here.